Hi students, today from social science we will learn natural vegetation and wildlife. So first we will take natural vegetation. Natural vegetation, natural, Prakriti Pradat or vegetation Vanaspati, which are surrounding to us. You have seen grasses, small plants, trees, all this that includes in vegetation. So India is a country where large natural vegetation is there. That is a resource for the country. अगर हम देश की बात करें, भारत में वनस्पतियों का भंडार है. कई तरह की, कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है. आपके चारों तरफ आप कई प्रकार की वनस्पतियां देखते हैं. तो आइए इन सब के बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं. तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी 12th प्लेस में आता है. दिस इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इन 12th प्लेस. सो different kinds of vegetations are found in India. Flora and fauna. So plant kingdom and animal kingdom. So plants species is 47,000 plant species are there in India, which is 10th place in the world, or in India, Asia, it is in the 4th place. Next is flowering plants. Flowering plants, it's near about 15,000 species are there in India. अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल स्पीसीज there are 89,000 species are found in India. Vegetation of an area. In this way, these species are in natural environment. So natural vegetation that grown in natural without any human aid or without disturbing, without developing by the human. So that is called virgin vegetation. वर्जिन वेजिटेशन वो होता है जो किसी मानव द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया गया हो और उनकी सहायता से डेवलप ना किया गया हो, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप उगता है. तो इसमें आप जानते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्लावर प्लांट ग्रो करते हैं, तब वो वर्जिन वेजिटेशन के अंतर्गत नहीं आता है. तो इस तरह से ये भारत एक नेचुरल रिसोर्सेस से भरा देश है. देश में कई तरह के वेजिटेशंस पाए जाते हैं. अब हम देखते हैं कि ये फ्लोरा और फौना में क्या डिफरेंस है. फ्लोरा एंड फौना. Flora means plant kingdom, fauna means animal kingdom. So plant kingdom, you know that they are the producers and these are the consumers. ये अपने आप से खुद प्रोड्यूस करते हैं और ये इन पर डिपेंड रहते हैं. तो हमारे देश के फ्लोरा और फौना को इतने वैरायटी के लिए क्या कारण है, वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं जिसके कारण हमारे देश में इतनी तरह की वैरायटीज पाई जाती है. तो उसमें सबसे पहला है रिलीफ. रिलीफ के अंतर्गत आता है लैंड. लैंड मीन्स लैंडस्केप्स. लैंडस्केप में आप जानते हैं किसी भी देश में
प्लेन, प्लेटो, माउंटेन, रिवर वैलीज। तो ऐसे डिफरेंट लैंडस्केप में डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि आप जानते हैं समुद्र किनारे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होता है, या राजस्थान की तरफ जाए तो कटीली झाड़ियाँ मिलती है। सो थॉर्नी फॉरेस्ट इज फाउंड इन Rajasthan desert. In this way, land is making the difference in natural vegetation. Next is soil. Soil also makes the difference in natural vegetation. You know that plain area having very fertile soil, or if you go to mountains, there the laterite soil is found, there the deep root plants are there. So in this way, grasses, Himalayan region, tundra region, etc., mosses, small plants are grown. In this way, soil makes the difference in natural vegetation. This comes under relief. Next important point is climate. Climate is also a factor which makes difference in natural vegetation. So under climate, first we will take temperature. As the temperature changes, the plants, आपने अपने घरों में देखा होगा कि घर के अंदर जो प्लांट रखते हैं उसका कलर डिफरेंस होता है या उसके साइज में डिफरेंस आ जाता है, और हाई टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स के हाइट बहुत ज़्यादा होती है। और in this way, the temperature makes the difference. Like Himalayan mountain region, conical type of plants are found, that is low temperature ice snowfall areas. There the climatical condition make the difference in vegetation. Next is photo period. What is photo period? Sunlight. Sunlight कैसे प्रभावित करता है? You know that when we have difference in altitude, latitude, and in this way, sunlight in the higher latitudes, in the polar regions, there the type of vegetation is different from the equatorial region. ट्रॉपिकल रीजन, आप जानते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में एप्पल वगैरह ग्रो होता है, हमारे अंडमान निकोबार में नहीं होता है। इसका कारण है हमारा लैटिट्यूड। इन दिस वे ऑल्टीट्यूड, हिमालयन रीजन या हमारे झारखंड एरिया में और हमारे जो प्लेन एरिया में जिस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, ग्रासेस मिलते हैं, उसमें भी फोटो पीरियड का डिफरेंस होता है। सनलाइट के डिफरेंस के कारण ये डिफरेंस आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्लाइमेट एंड रिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। तो अब हम चलते हैं फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन, what is the importance of it? इसका क्या महत्व है, इसको मैं आपको बताने से पहले ही आप एक नोटबुक ले लेंगे तो शायद आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? सो लेट्स सी, चलिए, फॉरेस्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले फॉरेस्ट दैट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर फॉरेस्ट है तो एनिमल है और फॉरेस्ट है तो हम है। सो इट मीन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंट्रोल्स टेम्परेचर। आप जानते हैं हम कभी भी
गर्मी के मौसम में कहीं से चलते हैं तो वहाँ कहीं कोई पेड़ की झाड़ियाँ होती है तो उसके साइड में हम बैठ जाते हैं, वहाँ पर बहुत ठंडक होती है, तो ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, enhances the quality of environment. How it enhances the quality of environment? गुणवत्ता, हमारी प्राकृतिक वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कैसे गुणवत्ता को? You know that the plants take carbon dioxide and they release oxygen. So we receive oxygen from plants. So if we have more forest around us, then we will be more healthier. Next, it controls soil erosion. सॉइल इरोजन, हमारे चारों तरफ जो पेड़ हैं उनकी जड़ें मिट्टी को अपने में बांध के रखती है, जिससे कि बारिश के समय मिट्टी बहती नहीं है, तो सॉइल इरोजन इज एन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विंड फोर्स कंट्रोल। विंड फोर्स, जो हवा तेज चलती है, अगर उसके रास्ते में बहुत सारे जंगल फॉरेस्ट आ जाते हैं तो वो पेड़ उनको रोकती है, तो ये विंड फोर्स को भी कम करता है, फॉरेस्ट इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट इज इट्स अ लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटी। हमारे जो आदिम जनजाति है उनके लिए, वो जंगलों में रहते हैं और उनका जीवन निर्वाह का साधन ही फॉरेस्ट है, उनसे प्राप्त होने वाले फल फूल कंद मूल और शहद वगैरह को लेके वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो फॉरेस्ट उनको लाइवलीहुड प्रदान करता है। इट्स नेक्स्ट इज, अगर हमारे चारों तरफ फॉरेस्ट है, इट्स इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। industrial raw material for industries. नेक्स्ट, और भी ये ट्रेड में हेल्प करता है, एंड इन दिस वे इट्स ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। सो लॉट ऑफ पॉइंट्स कैन बी नोटेड। तो आप इतने पॉइंट्स भी अगर एग्जाम के लिए लिखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझ जाइए ये इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। फिर से हम चलते हैं। कंट्रोल टेम्परेचर, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। हमारे जो फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है तो हम है। तो ये नारा एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, control soil, control wind force, livelihood for the human, raw material, and it's a habitat for wildlife. ये भी इसमें आ जाता है। तो मैंने जैसे कहा आपको ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारे फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे कि इतना इम्पोर्टेंस होते हुए भी what we do, as it has given us by nature in free large amount, so we recklessly cut it. हम बिना किसी दया के निर्दयता से इसको काट डालते हैं और इससे हमें बहुत सारे हानियां, नुकसान होता है। तो आइए हम अब देखते हैं कि what are the reasons of decreasing of forest? फॉरेस्ट के कम होने के क्या क्या कारण है? How the natural vegetation is now depleted. So first is, you know that in from early time people used to do pastures.
grazing pastures. Next, cutting forest for industries. For developing industries. इसके अलावा people use land, forest cut down and they develop cropping, agriculture. Large area is cut down and agricultural lands has developed. Next is civilization or industrialization. I told you, like that only urbanization. What is urbanization? आप जानते हैं कि आजकल नोएडा एक नया सिटी बन गया है दिल्ली के पास में। तो दिल्ली था, दिल्ली के बाद न्यू दिल्ली हुआ, अभी नोएडा हुआ। इस तरह से हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए हम सारे नेचुरल वेजिटेशन को डिप्लीट कर रहे हैं। सो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज ड्यू टू दिस ऑल कॉजेस: ग्रेजिंग पास्चर्स, cutting for developing industries, agriculture activities. Then urbanization and industrialization, etc. So these are the causes due to which our forested lands are depleting. कम हो रहे हैं आज हमारे फॉरेस्ट लैंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि दिस आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ये कैसे? आप जानते हैं कि एक फॉरेस्ट है तो उसमें रहने वाले जीव जंतु वहाँ के फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है वो किस तरह की फॉरेस्ट है। जैसे अंडमान निकोबार के किसी भाग को आप ले लीजिए, कैम्बल बे में जो एनिमल्स मिलते हैं वहाँ के फॉरेस्ट के, वो शायद डिगलीपुर में नहीं मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये पूरे इंडिया में भी आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं इकोसिस्टम। What is ecosystem? As I told you, the area where a particular type of vegetation is found, that distinct type of vegetation develop a distinct type of animals. So in this way, they depends on vegetation. So there is relationship is there. So interdependency and interrelationship is a part of it. So natural vegetation, wildlife and physical environment with human being, this complete cycle, this complete is known as this ecosystem. Means the interrelationship and interdependency between natural environment, wildlife, human being and the physical environment is called ecosystem. When we study, when we make a logical study on this, then the subject becomes ecology. So ecology के अंतर्गत नेचुरल एंड वेजिटेशन या वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी और उसके साथ में जो हमारा वातावरण है और मनुष्य, इन सबका आपस में जो रिलेशन है उससे हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, हिंदी में इसको पारितंत्र कहते हैं।
तो ये हुआ आपका इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम को हम जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, as the population is increasing, what we do depend upon more and more on environment. So as I told you earlier, we are depleting the environment. In this way, in the ecosystem, as human comes, human is degrading the environment. So this natural vegetation and on wildlife, the direct impact is there. So there is imbalance in the environment. Imbalance in ecosystem, the plants, there is this, the cycle of ecosystem in which the snakes eats frog and the food chain is there. The food chain totally disturbs and it indirectly comes to the human being. So when we disturb the environment, that's why only the wildlife attack is there on us, and we have different kinds of diseases also caused by decreasing of natural vegetation. As human is an integral part of nature, it's very necessary that we should make a balance in this environment. Now let us see what type of forest is found in India. So it is biomes. There are different types of forest found in India. Number one is tropical, deciduous, evergreen forest. Number two, tropical, deciduous forest. Number three, thorn forest. It is also known as shrub forest. Next is mountain forest. Number 5, that is mangrove forest. So these are the different types of forest found. India comes in tropical region, so tropical forest, tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. Other than the desert areas, and this is mountainous area, this is coastal area. Now we will go one by one. First we will take tropical evergreen forest. In tropical evergreen forest, you will get an examination to explain this. So what points you have to go through? Number 1 is characteristics. What are the characteristics of this forest? Number 2 is what amount of rainfall is needed for this kind of forest to grow. Number 3 is which area this kind of forest is found. Number 4 is what are the trees found in this forest. Number 5, what wild animals. So if you keep in mind these points, your elaboration will be easy. You can make a detailed explanation for that.
Now first we will go for characteristics. Number 1, evergreen forest. Evergreen forest, as from this type of forest is green throughout the year. Because of heavy rainfall, the rainfall I told you, that is 200 and above. Rainfall, those areas, there the evergreen type of forest is found. So what are the areas of 200 centimeter rainfall? That is the Western Ghat of India, Andaman Nicobar Islands and Meghalaya and the northeastern part. These all areas having the amount of rainfall, very high rainfall. So this trees goes very tall, about 60-meter height it receives. In between that, lot of creepers are there, short trees are there. So there are different levels of this tree, this forest. So in this forest, various kinds of trees are found. What are the names of the tree which is found in this area? That is mahogany, ebony, rosewood, etc. are the trees found. These trees are very hard and hardwood, they provide very hardwood. And next is, this forest is very dense. As the different varieties of trees are there, there are number of wildlife found in this region. It is reptiles, snakes are there, and in this way alligators are there, all types of animals, wild animals, like elephant is found in this forest, or pig is there, deer is there. These are the types of animal found in this. And the areas I told you, in this way you can explain this evergreen forest. Next kind of forest is tropical deciduous forest. The deciduous word means broad leaves. Deciduous forest, they have 6 weeks. They shed their leaves for 6 weeks in summer. This is the characteristic of deciduous forest. Deciduous forest is also known as monsoon forest. This deciduous forest is of 2 kinds. One is moist deciduous. Second one is dry deciduous. First we will take moist deciduous. Moist deciduous forest, in where the amount of rainfall is 100 to 200 centimeter rainfall, and here in dry deciduous 70 to 100 centimeter rainfall. So in the moist deciduous areas are the parts of Orissa, the western part of Orissa, and some parts of Chhattisgarh area, and in this way these are the areas where Tamil Nadu is also there. Next is the dry deciduous, which is found in western part of UP, Bihar, etc. area. So moist deciduous trees are neem, here teak is common in both the type of forest. This teak is there, bamboo is there in moist deciduous. In Andaman Nicobar Islands also, this moist deciduous you can see Kadamtala area, Rangat area, up to that area is bamboo, teak, and in this way kusum tree or Arjun tree.
These are the trees of moist deciduous. Dry deciduous, if we come, there also a teak is found, and in this way neem is common. Neem. Next is mulberry. These are the types of trees found. This forest here, the sandalwood is also found. This type of forest, sandalwood is also. So these are also economically, teak is very important tree which is commercially used, and this forest, as it is found in the middle part of India, here you can see the whole region is with the deciduous type of forest. These areas has used, forest has been cut down and used for cultivation of crops. So forest is disappearing from this area and people used to cultivate this area. So the animals found in this, they are the pig, deer, elephant, and the common animals, tiger, then lion, etc. are found in this. The birds are also found in this region. So this is about tropical deciduous forest. This chapter, up to this, today I will stop here, and next part will be taken in the next class. So take your book and read once, that is very necessary. I know you like geography very well, so it's very easy. So try to make notes and study. Stay at home, enjoy the days also, attending the class. With that, enjoy your days. Thank you very much.